अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग चिकन का एक डिफरेंट रेसिपी बना रहे हैं। पोटैटो मिक्स करके चिकन और आलू रेसिपी बना रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही मज़े का है और बच्चे बहुत पसंद से खाएंगे। चलिए देखते हैं नवाब्स किचन के स्टाइल में आसानी से कैसे बनाते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए एज यूजुअल हम लोग इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होते ही हम लोग इसमें क्यूमिन सीड्स ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें स्लाइस्ड ऑनियंस ऐड करेंगे। ऑनियंस थोड़ा सा ब्राउनिश शेड में आते ही हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। ऑनियंस और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ साथ हम लोग इसमें फाइनली चॉप्ड टोमेटोस भी ऐड करेंगे। टमाटोस अच्छी तरह बॉईल होने से पहले ही हम लोग इसमें रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट ऐड करेंगे। टमाटोस अच्छी तरह बॉईल हुए बाद हम लोग अच्छा सा वॉश करा हुआ चिकन इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला भी अभी डालेंगे। सारे स्पाइसेस ऐड करे बाद हम लोग इसमें पोटैटो पीसेस भी ऐड करेंगे। इसी रेसिपी में थोड़ा सा स्पाइसीनेस ऐड करने के लिए हम लोग इसमें स्लाइस ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे। चॉप्ड कोरिएंडर से गार्निश करने से पहले इसको हम लोग 10 to 15 मिनट्स तक हल्के से आंच पे पकाएंगे।
रेसिपी का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया बना है। इसको फाइनली हम लोग फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर से गार्निश करेंगे। फाइनली रेसिपी कंप्लीट हो गया है। इसी रेसिपी को हम लोग बगारा राइस के साथ बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नवाब्स किचन चैनल जो भी देख रहे हैं अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करिए। उसके वजह से हमारे सर्विसेज और भी बढ़ाएंगे हम। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारी टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफ़िज़।